वर्टिकल स्कोर जो है आपके पार्ट 1A का वर्टिकल स्कोर, उसे नीचे कैलकुलेट कर लीजिए, सम कर लीजिए। कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया है? फैंटास्टिक। ओके, जितने लोगों ने मेरे सबमिशन कर लिया है पार्ट 1A और पार्ट 1B, उसको ऐड करके स्क्वायर बॉक्सेस में डाल दीजिए, जहां पे ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है। इज दैट ओके? डन। और जो लास्ट का स्कोर है पार्ट 2 का, वो सीधा सीधा उठा के नेक्स्ट बॉक्स में डाल दीजिए in the graphs. After that you have graphs, right? So addition of part 1A will go in the first graph boxes, and the first graph, ऊपर देखो first graph है, yes, you're right, Raj, you're right. Don't draw the graphs, it's okay. I'll just give me this. Even if you don't draw the graphs, it's fine, no problems. So if you can see this on my on the screens here, or what I'm showing, here you will put in the score of part 1A and part 1B. इसका मतलब क्या है? Assuming my first score that's come up totaling is 27, okay, and my part 1B is 20. So you will put 47 there. Got it? Logic understood? I'll repeat what I'm saying. The first 10, you have it here. Okay? The vertical score has come to 27. Okay? Now you have part 1B, and the score has come 20 here. Okay? So 27 plus 20 will go in the green box. Will go in the green box. So column 1 total of part 1A, column 1 total of part 1B. Addition goes to the first green box. And then just repeat that. And for part 2, whatever is the score that has come up as the addition, just place it that way. Is that okay? Understood? Okay. So I'm going to ask a question now to everybody. How many of you have the strongest or the highest score in green boxes? Raise your hands. No. Total addition of part 1A and B, highest score is green box. Raise your hands, please. सब इधर आ जाओ. सब इधर आ जाओ. सब जितने पार्ट 1A और पार्ट 1B का टोटल करने के बाद सबसे बड़ा स्कोर जो आ रहा है वो लास्ट के 4 बॉक्सेस में, वो ग्रीन है. इधर आओ, इधर आओ, सारे इधर आ जाओ. नहीं सारे बाद में पता चला शिवाजी के पास. हाँ, बस सगळं चांगलंच होणार. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू रन, वी डोंट हैव टाइम, रन फास्ट. असू द्या ना, मग इथे या 42 ना, 42. सेम है. Then I'll tell you why it has happened. Come on my right hand side. Red house. This is red house. I'll tell you what is that. If it is a cusp, I'll tell you what is that. Hold on. Music down, please. Listen to the story. Okay. Now what happens one day is there are 4 friends sitting. Okay. These 4 friends said that we will do something together. Okay. तो 4 फ्रेंड्स साथ में आते हैं. एक जन बोलता अपन करेंगे मरेंगे वंदे मातरम इतना कर देंगे अपन. जो ज्यादा हंस रहे वही करते हैं वो. उनकी यही आदतें हैं. ठीक है. दूसरा क्या बोलता है, नहीं टीम अच्छी होनी चाहिए. अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा. अरे लोग आ जाएंगे रे, मैं मालूम है कैसे आ जाएंगे, मेरे को मैं कर लूंगा. ये बोलते नहीं भाई, जब तक दिखता नहीं तब तक मेरे को समझ में नहीं आता. ये बोलते कारण क्या है, क्यों करना है ये सब कुछ, भाई एक बार बता दे. और ये अपने ख्वाबों में है कि अगर बनेगा तो कैसे बनेगा. पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा सब कुछ. ये घर पे अपना पिकनिक भी प्लान करते हैं ना, तब तक पिकनिक लोग 4 बार मना के आ जाते हैं. ये तभी भी प्लानिंग ही कर रहे हैं.
अच्छा, कितने लोगों ने आपको बोला है भाई टाइम पे डिसीजन ले लिया करो? अरे बहुत लोगों ने बोला है। हाँ देख। और कितने लोगों ने आपको बोला है भाई धीरे से लिया करो, जरा सोच के लेते हैं, अंदर जाते हैं उसमें। पर अपने को तो घाई है दुनिया की। डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? ये क्या होता है डॉक्यूमेंट नाम की चीज? काय को मेरे को सब मालूम नहीं मालूम तो पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। देखो देखो देखो। अच्छा, ये अपने भाई लोग हैं जिनको सब स्ट्रक्चर में चाहिए। ये शादी भी करेंगे, प्यार करने के लिए भी कारण चाहिए। कल तो बोला था ना मैंने आई लव यू, आज क्यों बोलूं? तुम लॉजिक बताओ। ओके? हाँ, रोज रोज का दैट इज। इनका जब तक मूड आता है प्यार करने का तब तक खत्म है पंगे। और ये बेचारे प्यार के लिए तरस रहे हैं सबसे। सब लोग तरसते हैं। Okay, now this is a little fun, but let's look at this team, okay? Fantastic multitaskers. Fantastic multitaskers, okay? They know how to talk to people, how to get along with them. इनके साथ अगर काम कर रहा है बस कंधे पे हाथ रखो, क्या चाहिए? सब हो जाएगा। इनको तुम लॉजिक बताओगे इनको समझ में? क्योंकि मैं अभी भी बात कर रहा हूं ना, ये सोच रहे थे कि ये कैसा बात करता है, ये उधर है अभी। ये मैं बोल के आ रहा हूं उस पे नहीं, मैं कैसे बोल रहा हूं इस पे बहुत डिपेंडेंट है। इज दैट ओके? मेरे बर्ताव पे ज्यादा ध्यान है, मेरे कंटेंट पे नहीं। इज दैट ओके? ये इधर एनालिसिस चल रहा है, इधर चल रहा है एनालिसिस। कह रही है सही तो बोल रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हाँ यार, इससे बात करता हूं ऐसा होता ही नहीं है यार, मेरे को डिसीजन लेना है तो मेरे को पास डेटा नहीं है, कुछ नहीं तो मेरे को होता नहीं है। ये सब एनालिसिस अभी चल रहा है। ये बोल रहा क्या मस्त बोल रहा है ना सर, ये अपने धुन में, इनको कोई दुनिया की लेने देनी नहीं पड़ी। और ये अभी भी रिसर्च ही कर रहे हैं, ये अभी भी रिसर्च ही कर रहे हैं। ओके, वन फैंटास्टिक क्वालिटी ऑफ these guys are like glue in the team. सबको जोड़ने का काम करते हैं। आपकी संस्था में या in your organization right now, there would be somebody who just intuitively understands कि आप अच्छे हो या बुरे हो, आपका मन अच्छा है या बुरा है। Intuitively, कुछ करने की जरूरत नहीं होती उनको। वो आपसे बाजू में से गुजरते हैं ना, तभी बताते हैं यार यू ओके है कि नहीं? ऐसे लोग, उनको इंट्यूटिवली मालूम है कि कुछ हो रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा। They are people with connection. Everything has to be connected to them. Okay? I'm sure if Sanket and me have a great relationship for the last so many years, it's not because bloody I'm a good consultant. It's because he feels connected to me. Is that okay? If he doesn't feel connected to me, he's not going to join. कितना भी घंटे का अच्छा consultant, it doesn't matter. What matters is my connection to him, because that's his decision-making point. Is that okay? Yes. Now just imagine if you want to drive a human being to a goal, who is this way, who are connected with humans. Isn't it important that you make them feel secure? What is the word? Secure. Their performance is not driven by data. Their performance is driven by security amongst the people that they are in. अपने को कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। आना है तो आ, नहीं तो भाग। किधर गए हमारे कुछ भाई बंधु दिख रहे, चेहरे छुपा के बैठे लगता है पीछे। कैसे चेहरे छुपा के बैठे देखो पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो right? But one of the fantastic quality that these guys have, that they are dreamers. They can dream. They can see things that people are not able to see today. Okay? They are poor process orienters. They don't know bloody how to manage process. आता ही नहीं है प्रोसेस लगाना, काहे को प्रोसेस चाहिए, वो वाला हिसाब किताब है, क्योंकि मैं अपने धुन में हूं। But they bring in the energy in the team. They bring in something which probably all of us cannot see.
If these people are given freedom to operate, they will create magic. Now, what is the word here? What is the word? No, connection and security. Driving performance needs security here. What does driving performance need here? Freedom. अब ये चार दोस्त जो मिलके धंधा चालू करना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? मेरे को चाहिए फ्रीडम, दूसरा बोलता नहीं अपने को सिक्योरिटी चाहिए, दूसरा बोलता अपने को लॉजिक चाहिए, चौथा बोलता भाई रिसर्च तो कर लो ये सही चलेगा कि नहीं चलेगा. This is a scientist brain. This is a scientist brain. I'm actually going to show you कि इनके न्यूरॉन्स चलते कैसे हैं. So I'll give you an example of this. So I flew down from Singapore and it was a very nasty flight. So generally what do you do when you have a bad travel experience? What do? You share it with somebody, right? So मैं office पहुंचा. I was in Mumbai that time. Office पहुंचा and the guy I used to smoke then. बोला चल यार सुट्टा मार के आते हैं. So I took two of my friends. बोले चलो नीचे गए. So as human being I started explaining that the flight was nasty, idiot, ये वो सब चल रहा है मेरा cribbing crying. तो एक चालू हो गया, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. दूसरा चालू हो गया, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. आधे घंटे बाद एक भाई साहब प्लेन का थ्रॉटल कैसे उड़ाते हैं ये हमको सिखा रहा था. और ये लेफ्ट वाला भाई साहब परेशान हो गया, बोलता तेरा बाप पायलट था क्या? इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है. इतनी इंफॉर्मेशन होती है. और ये वाले जो है ना, ये इंफॉर्मेशन से बहुत चिढ़ते हैं, बोलते तू लॉजिक की बात कर, अब भी क्या जरूरत है? तो इनको बस एक साथ बिठा दो और फिर झगड़े का तमाशा दो. बस तमाशा, पीछे बैठ के मेरे जैसा तो मस्त तमाशा देखता है. इनको बस एक सवाल दे देने का, ये अपना बता रहा है कि मैं कितना शाना है, ये बता रहे कि लॉजिक क्या है. इनको कोई लेना देना नहीं पड़ा. ये बोलता है अरे साथ में काम करो ना, जाने दो. You understand the fun that is happening in everyday life? That's happening in our houses, that's happening in our offices, in the meetings that we are conducting. Right? But what's the strength? The strength is if you put them to research. Give them a long-term goal. Don't bloody put them into a short-term goal. They will underperform if you're asking them to perform on 31st March को दो मेरे को, मैंने कहा नहीं. तुम इनको मेरे को आज बताओ अगले मार्च में क्या चाहिए, मैं लाके दे दूंगा. You put them into difficult situations. These are the idiots who can get themselves out of difficult, critical situation. ये है वो लॉट. ये वो लॉट नहीं है. इनको प्लान चाहिए, लंबा चाहिए, 4 साल बाद क्या होना चाहिए, वो चाहिए, उधर है वो सब. ये Why do I call idiots? Because they're in all मस्ती. इनके लिए दिमाग में गेम चल रहा है, जिसको सोफिस्टिकेशन लैंग्वेज में क्रिएटिविटी बोलते हैं. और रोज आती है भाई, है ना? But what's the best part about this team? Like they're good in research. If you put them to a long-term goal, if, by the way, all of your leaders, if you pick up long-term goal of the organization, then you can consistently work. Because in order to take decision, you require information. What is it? You require information and more detailed information and more detailed information. That makes you feel good that what I'm doing is right. इनके गाड़ी लेने का प्रोसेस पूछो आप. गाड़ी लिए किसी ने? हाँ बताओ. हाँ ये देखो, ये साहब बताएंगे अभी गाड़ी कैसी ली इन्होंने. हाँ जी सर बताओ. नहीं बताओ. No, let's listen and listen. No, understand how we are. No, why are we judging the world? हाँ जी सर गाड़ी कैसी ली बताओ. हाँ बताओ. हाँ बताओ. एक्चुअली गाड़ी चेंज करना था. हाँ. छोटा सीडान गाड़ी था, वो चेंज करना था. ओके. चेंज करना था, तो वी थॉट कि थोड़ा सा बड़ा लेते हैं. देन वी वेंट, वाइफ एंड मी, एंड इनोवा ठीक है, तो हम लोग गए इनोवा. ओके, उधर रेड कलर. वाह चलो. तो बोला इनोवा लेते हैं, इनफ है. तो बोलते यार लेना है तो अच्छा ले लो ना, अपना प्रेस्टीज जैसा तो लगना चाहिए. बोला प्रेस्टीज का क्या करने का इधर को, क्यों चाहिए? किधर फोकस है? लोगों को कैसे दिखेगा, इनको काय को. अच्छा
प्रोसेस बताओ, पूरा प्रोसेस बताने का, किधर किधर कौन से शोरूम में कितनी बार आउटलाइन ऑनलाइन गए। हाँ, फिर सब स्कोडा देखा, ओके, टोयोटो देखा, सब टोयोटो का वो छोटा वाला सीडान भी देखा, सब कुछ देखा। देन ये मारुति एंड एक्सयूवी मेरा, सॉरी हाँ मैं एक्सयूवी फाइनल बोलते हैं। आपका स्टेटस तो देखो, एक्सयूवी लेके 700 लेके क्या वो थोड़ा सूट तो होना चाहिए। हाँ बराबर, वापस सूट ही होना चाहिए। हाँ देखो, हाँ, तो हाँ। मैं बोला मेरा काम हो गया, बस 2 लोग एक्स्ट्रा बैठना चाहिए पीछे, बाहर जाए पीछे। अच्छा, इंजन कौन सा था ये भी रिसर्च किया है? हाँ वो सब देखा था, वो सीसी कितना, सब दोस्तों यारों को भी फोन कर लिया? नहीं, वो पूरा पेट्रोल में क्या है, डीजल में क्या है, वो सब कुछ देख लिया। उसमें क्या ऑप्शन है, अगर पेट्रोल लूँ तो क्या, डीजल लूँ तो क्या। अच्छा, गाड़ी लेने का तय कब था? हाँ, गाड़ी लेने का तय कब था? वो तो ऑलमोस्ट 6 महीने पहले ही था। हाँ। लेकिन चलेगा चलेगा चलेगा, देखते हैं, जब तक पूरा पोस्ट नहीं आता है तब तक क्यों लेने का ऑब्जेक्टिव चाहिए था। इनका तरीका कोई भी खरीदी करने का क्या है, पहला मेरे को अगर लेनी है मारुति 800, मैं BMW से शामिल। हाँ राइट। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि उसने एक सेल्समैन को बोला कि तू फॉर्च्यूनर भी लेके आ। तो मैं बोला फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए यार, वो खाली 40-50 लाख रुपए क्यों डालने का। तो वो लेके आया, वो मेरे को इतना अच्छा लगा। तो ठीक है ना, अभी 10 लाख ज्यादा जाएगा तो कुछ क्या लोन निकालना है क्या, क्या करना है उसके लिए, जो है वही देना है ना पैसा। और फिर फॉर्च्यूनर ले लिया। फिर उसके बाद और एक लॉजिक लगाया उसने, मैं बोला ठीक है चलो लेता हूँ, मैं एक बार देखता हूँ मेरा ना SIP में प्रॉफिट कितना है। हाँ देखो। तो मेरे को जेब से पैसा नहीं खर्चा करना है। तो देन आई से कि उसमें कुछ 70-80 लाख रुपए का इंटरेस्ट पड़ा था। अभी भी गाड़ी ली नहीं है। You understand the process of decision making, no? And we are expecting these people to work fast. देन वो कुछ 42 लाख था। मतलब हम लोग बोले कि ठीक है, किधर जेब से देना है, जो इनकम इंटरेस्ट है उसमें से देना है ना। तो उसमें से दे दो और गाड़ी ले लो। वेरी गुड। देखो देखो, अच्छा आपका क्राइटेरिया क्या था गाड़ी लेने का? नहीं, और एक चीज उसमें, अच्छा अभी लास्ट ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिक और उसमें 3 लाख का फर्क था। हाँ। तो मैं बोला छोड़ना गाड़ी, मैं तो ड्राइवर चलाता है ना, क्यों चाहिए तेरे को। Amit, do you understand the difference between your decision making and his decision making? एंड लास्ट में ऐसा हुआ, आई टूक द मैनुअल। अभी जब भी ड्राइवर नहीं रहता मैं चलाता, बोला था ना ऑटोमेटिक ले लो। Okay, this is a buying. थैंक यू। This is fun, no? Isn't it? एक buying process, how they process information by dependent है। Oh, okay, let me ask, किसी ने गाड़ी ली है अभी? लिए? नहीं, रुको, आपकी तो पता है ना। हाँ जी सर, आपने ली है, बताइए सर क्या प्रोसेस था, बताइए। तो मेरा प्रोसेस तो बहुत सिंपल था। बहुत सिंपल था, हाफ चड्डी पे गया, गाड़ी लेके आ गया। कि मेरे को इनोवा लेनी थी। इनोवा पता किया, वो 1 साल की वेटिंग थी। हाइब्रिड 2 लाख 2.25 लाख रुपए उसके ऊपर प्रीमियम था। उसको बुलाया, 2.25 लाख रुपए प्रीमियम दिया। वो चौथे दिन में गाड़ी घर आ गई। कि मेरे को था कि अगर लेनी है तो 2.25 लाख रुपए 1 साल क्यों वेट करना है, अभी लेकर के खत्म करो। So I actually have a friend who went to a shopping center in Swargate. Swargate is there in Pune. Okay, very close to that Seven Loves corner, right? He went to that shopping center in shorts to buy trousers. He went into Suzuki and got a car. घर पे गाड़ी लेके आ गया भाई। बीवी पूछ रही है क्या है, बोले कुछ नहीं, अच्छी लगी लेके आ गया। Thank God. अच्छा, let us understand from you. What is your हाँ आज एक एग्जांपल हमारा भी, इनको भी बोलना है। हाँ बोलिए। एक केस था, मैं विमान नगर पुणे में रहता हूँ। हाँ। सो हम लोगों का ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग रेसिडेंस है। हाँ। बट चल रहा था कि एक बड़ा फ्लैट लेना है विमान नगर में, क्योंकि वो बहुत लिवेबल एरिया है। तो हम लोग ऐसे ही, मैं, मेरे वाइफ, डॉटर्स, हम लोग ऐसे घूमने गए थे। एक सैटरडे इवनिंग था, तो पता चला कि भाई एक विमान नगर में एक अच्छा हाई राइजर निकला है, तो वहाँ पे हम लोग लेंगे। तो ऐसे ही वाइफ बोल रही थी, नाइट सूट में है, कहाँ जाएंगे अंदर में, क्योंकि वो सेल्स ऑफिस तब खुला हुआ था, क्योंकि लेट में था, उनका पीक पे था सेल। तो उस वक्त उन्होंने बोला कि भाई मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी, आपको ही जाना है। तो फिर मैं सैम्पल फ्लैट वगैरह देख के आया वहाँ पे। नेक्स्ट डे जाके हमने उसका बुकिंग का एडवांस भी दे दिया था। सडन डिसीजन
सेकंड बिकॉज हमको वो पसंद था, तो लाइक द वे सेड कि सेम वे मेरा गाड़ी के लिए भी ऐसी हुआ था, सीडान था, अपग्रेड करना था तो कैश परचेस ले लिया था. क्या बात. सो Very डिसीजन वेरी क्विक होता But है. this, अब ये very quick नहीं है. This is how you decide. It does not mean it is right. तो but Hello. एक Don't misunderstand. Please don't misunderstand that you are taking fast decisions or you are right. Not necessary. And they are taking late decisions, so they are wrong. No. It is the process, how much you need information to take a decision. It could be wrong or right. Both can be wrong or right. Is that okay? और नहीं तो चालू हो जाएंगे. देखो हम फास्ट लेते हैं, आप स्लो लेते हो. ऐसा नहीं है. We do much wrong, na? Yeah. I am not going to say that unless I know your data. Okay. Now let's understand. So anybody who bought a car? Yeah. Anybody bought a car? Go ahead, sir. Tell me how do you buy? 3 कार ले लिया, सब टाइम राम सर को लेके गया था. Is that okay? He works with Ram. बोले 3 गाड़ी लिया, तीनों बार राम सर के साथ गया, गाड़ी लेके आ गया. You understand the human connection? अच्छा, खत्म. हाँ बस खत्म. So you need a researcher. Trust. You need a researcher, which is because basically आलसी लोग हैं ना. You know that, right? मैंने सबके सामने बताने की जरूरत है कि जानते हो कि आलसी हो. When I say alsi, what do I mean by that? They'll find out alternate ways of doing the same job. Hey, this is a fantastic tool, huh? Alternate ways of doing the same job. But you confuse the team sometimes. Okay, now let's look at this. How do you buy a car? How anybody who has bought a car, just tell us how do you buy a car. Go ahead. Okay, last year only I buy a car. ये टोयोटा हाई क्रॉस देखने गया था. वो वेटिंग था 2 साल का, तो मेरा एक ही था कि ना 6 सीटर चाहिए, 3 रो का. हेलो. हाँ, तो वो हिसाब से फिर सारे ऑप्शन देखे. SUV 700 भी देखी, लेकिन वो कुछ ये नहीं लगी, तो सफारी वो टाइम पे नहीं आई थी. So I went for that. And why did you buy it? It was having same features which high cross was having. Only thing was that कि उसमें hybrid नहीं था. But मेरा भी ड्राइवर है, तो मैं सोचा अभी क्या है उसमें ले लेते. कंफर्ट ही देखा था उसका. Correct. बाकी मतलब ऐसा ही नहीं था. अच्छा, while talking, how much passion did you display? Did you notice? Zero passion. Zero passion. ये भाई साहब बता रहे थे कि मैं राम सर की वजह से गाड़ी लिया. ये बता रहे थे कितना कि मैंने घर फ्लैट कैसा. पैशन देखो कितना था ना. Isn't it? इनका कोई पैशन दिखा? The last time they must have said I love you to their wives also कि मैं साल हो गए रहेंगे. What does that mean? It means it is difficult for them to express emotions. That does not mean that they don't have emotions. They do not process the information in such a form कि वो एक्सप्रेशन आता है. राइट? इनको पूछो. कहाँ गए? कुछ लोग चले गए लगता है सुन सुन के. अपनी बेइज्जती सुन सुन के चले गए लगता है कुछ. इनको पूछो. ये किसी को भी कुछ भी माल बेच सकते, कुछ भी. इनकी जिंदगी का प्रेजेंटेशन कभी कंप्लीट नहीं होता. When is the last time you completed a presentation? Tell me. पर बात करेंगे तो ऐसा लगेगा यही अल्टीमेट प्रेजेंटेशन है. Which also means they are fantastic sellers. So they see a visual, they are in that zone, so they are fantastic sellers. These guys are fantastic executioners. Right? So when you build a team, remember that we need 4 kind of people. 4 kind of people. We need somebody who can research well, we need somebody dream well, we need somebody who can execute well, and we need somebody who can connect well. But unfortunately, people want people like them. And that's where the stupidity starts. Now why? Because we lose the tolerance of expecting and answering each other's difference of opinions. Because the way we see the world is the right world for us. Is that making sense? And if we don't see this as per our
then we say he's not like me. And if you have people not like you, it's a good sign. You just need to have the ability to manage them well. You don't need people like you. You need different point of views. It is your tolerance that creates the magic. Now, I am leaving it all to you of what to read, what not to. But what is graph 2? Graph 2, जो भी highest score है, is the graph of miscommunication. उस आदमी के साथ या औरत के साथ आप सबसे ज्यादा मिसकम्युनिकेट करोगे. The graph 2 जो नीचे है, हाँ, this highest score. What is the highest score here? So purple. You will miscommunicate with the purple brains the most. ग्रीन और पर्पल का हिसाब किताब नहीं जमेगा. ग्रीन से नहीं जमेगा. अब जमेगा नहीं, ये पॉइंट नहीं है. यू हैव टू बी कॉन्शियस. सो हेंस अभी कोई अपने माथे में लिखेगा तो नहीं मैं रेड है, पर्पल है, ये है, वो है. पर बराबर है ना, इनका इंफॉर्मेशन ज्यादा है कि आपका इंफॉर्मेशन ज्यादा है. इसी में तो टसल है जिंदगी की. दैट्स वेयर द फाइट स्टार्ट्स. My humble request here is, everybody, my humble request is, when you know that somebody takes a longer time to take decisions and the person is research, never get into argument with them. क्योंकि उनके साथ आर्गुमेंट में जाओगे तो वो कपड़ा उतार के रख देंगे. Sorry? Come now. Yes, I'll tell you. I'll come to all that analysis part of it. But you understood? We need four kind of brain processors, if I may use the word. We need four kind of different people in the team. Now, when you're hiring, please keep that in mind. If you have a very logical person, a very logical, goal-oriented person, in a function like HR, भाई साहब वो छड़ी लेके काम करेगा और फिर हिसाब किताब. If you have somebody who's as green as possible as they are, I've seen people extreme greens, extreme purples, okay? If you get, he will excite, fantastic in engagement, fantastic in all of that, excite करेंगे लोगों को. If you have purple, वो कैलेंडर बनाते बनाते 6 महीने निकल जाएंगे, पर परफेक्ट कैलेंडर बनाएंगे अगले 3 साल का. Understand what I'm saying? These guys will have one-to-one connect with those employees. Naturally, कुछ करना नहीं पड़ता, नेचर से वैसे हैं वो. Now, the question here is, oh, this is my, does that mean बाकी सब मेरे पास नहीं है? No. This is the prominent way you process in your natural position. Naturally. Stress नहीं है. Okay? कोई moderations नहीं है. This is how you naturally will behave. Okay? Now, somebody asked me a question, if I take the test multiple times, would these scores change? Yes, but your anchor will not. If there's an anchor, that will not. So whatever is the highest score will not. Is that okay? Now, few people had similar scores, right? You will show similar traits. You will show similar. But one, if you look at next 6 months, okay, you will see your scores will change. But one will emerge as an anchor. Just remember this. Only one. Is that okay? Now, what is the learning out of this? Humans have made difference. We understand that. Humans have made difference. You can read to what are the research, how it is created, all of that is there in there. That's not a problem. Okay? But fundamentally, it is important for all of us to realize the fact that unless and until I am able to understand different point of views, I'm able to take people and hire people and develop them from different point of views, I am not going to make a business that is leading to execution. Is that okay with everybody? Please don't try to find your clones. If you find your clone, you're also going to bring the same problems along with that.
Is that okay? Now, how do you get it? How do you process it into the execution? Let's have a quick look at what. Hey, did you enjoy all of this? Yes? Fantastic. Thank you very much. Sorry. मेरा कौन सा है? क्या लगता है मेरा कौन सा है? कितने लोगों को लगता है? क्या लगता है? All of this is trained. All of this is trained. This is where I am. ठीक है? अगर 15 साल पहले मिलते तो बहुत रूड आदमी था मैं. Right? But the rest is trained. Let me be very candid and honest to you. I've got myself trained on how to deal with people, how to understand them, got myself educated on that. That's the logic, right? But yeah, naturally, even my natural stance today is I look at the logic first. Yeah, is that okay? But when there is a different point of view that comes in, there is a certain settled man who says that this is a different point of view, let me look at it. Yeah? 2 important skills required to solve a big problem is research and analytics. Okay? To solve something that is not seen is research and analytics. Just don't forget this. Is that okay? Yeah? So, thank you very much. I hope you enjoyed this. I'm going to take you to a small presentation now so you understand कि ये सबको जोड़ने के लिए there is a simple tool. If you use that tool, you will be able to execute things in a better show. अच्छा सबसे पहले चिढ़ाने वाले लोग रहेंगे ग्रीन ब्रेनर्स जो अभी एक दूसरे को बोलेंगे देख तू ग्रीन है मैं रेड है देखो चालू हो जाएंगे अभी All right, can I have a presentation please? All right, okay. So let's look at this, okay? Quickly, can I have your attention here please? Quickly. You got to do a lot of things. And most of the time, the information is all segregated. So these guys typically can have an argument with you right now, and after 15 minutes also have a cigarette with you downstairs. No problems with that. They're 2 different things. But it's very difficult for a blue brainer to do that. Okay, it's very difficult for a green, or rather a purple one, he will still be processing that fight only. For them it is very, and the justification is, अरे वो अलग है और ये अलग है ना. How many of you do that? ये अलग है वो अलग है. This is how you justify it. And a blue brainer says, how is possible? यार वो अलग है ये अलग है. अपन ही तो बात कर रहे थे ना. Connection is very important. This is how typically the neurons work in the green brainers. Go down, next. Right? It is very critical for blue brainers to feel. People who were blue brainers who came in yesterday morning here picked up a place, a location where they can straight see me. How many blue brainers? Just raise your hand. Please look at where are your locations. Where you can straight get the connection. Okay? So while you guys are working with me since yesterday, it took me around an hour to understand who's who and to make sure that I'm navigating this game well. Is that okay? Because if I don't understand you, I'll not be able to serve you better. Blue brainers are fantastic glues, and what I want you to all understand is, if you have a blue brainer, please put your hands on the shoulder, take him along. He's somebody or she's somebody who can work for 24/7 without doing oof. Just need a simple gratification and recognition that is required. Blue brainers are also prone to a lot of issues on stress because they have a poor ability to say no. They're not able to say no. And because they're not able to say no, they get into stress. For a red brainer, it's very easy to say yes or no. For a green brainer, it doesn't matter if they've said yes or no because they forget anyways. For purple to say yes or no, 6 months are gone. So, they're still okay. These characters are still okay. Right? But for a blue, it is very important. If they say yes, they want to do it. So they'll sit all throughout the night.
they'll take all the stress that is required, and that's probably one of the reasons. And if they do not get that emotional connect with that individual again, or for the group of people again, they are not motivated to do that job enough. Okay? You remember मैंने मस्ती में कहा था कि आप motivated आदमी लेते हो, demotivate करते हो और बाहर भेजते हो? This is the reason why that happens. Because our conversations with each other are not productive. I'm going to give you 20 words. If you put it in your vocabulary while you're talking to people, you will see you are able to connect to a lot of people. Okay? 20 words. These are 20 magical words. And I'll tell you, every time when you talk to people, try using it in your emails, try using it in your conversations, try using in one-to-one conversation and see the magic that's happening. Okay? But do not use it to manipulate people, because first time they will do it, second time they'll do it, third time they'll know that you're manipulating them. So make sure that the intent is right. That takes us to the next part of it. That's what I said about red brainers, right? There are logic, there is work, there's flow. If these things are not in that, अगर document बना रहे हैं, इनके emails को भी check करोगे. How many red brainers? इनके emails को check करोगे. Point number 1, point number 2, point number 3, point number 4 ऐसा आएगा. Yes or no? How many green brainers? कितनी बार attachment बोलते हो? अपन attachment डालने ही भूल जाएंगे. और पर्पल ब्रेन का पूरा जो ईमेल पढ़ते 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 ग्रीन ब्रेन बंद कर देता है वो मेल. इतना बड़ा लिस्ट. उसके नीचे वो जन्मा किधर था, उसका डेजिग्नेशन क्या था, उसने किधर किधर पढ़ाई लिखाई करी, उसके माँ पापा कौन है, सब लिखता है वो सिग्नेचर में. कितने पर्पल ब्रेन है, हाथ ऊपर करो. करते कि नहीं करते? सब चाहिए नीचे, डेजिग्नेशन सब. एक ग्रीन ब्रेन ईमेल लिखता है, बोलता है प्लीज डू दिस. डियर कौन है मालूम नहीं, बेस्ट रिगार्ड्स. So अपनी हरकतें भी वैसी ही है, right? So red brainers need structure. So if you're talking to them, there has to be structure. Let's go to the last part of it. And this is what I said. These guys enjoy the process of research, not the outcome. Is that okay? The purple brainers enjoy the process of research, not the outcome. Outcome कुछ भी हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता. साइंटिस्ट दिमाग है ना, वो उस प्रोसेस में एंजॉय कर रहे हैं. एंड द मोमेंट यू आस्क फॉर रिजल्ट्स, दैट इज व्हेन अच्छा ये रिजल्ट के लिए भी करना है, राइट? बट एज आई सेड, इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू मेक श्योर दैट द रिसर्चर्स दे हैव फैंटास्टिक पीपल व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म गोल्स. Every information in their brain is relation in nature. Everything is connected to everything, but very unlike blue brainers. Blue brainers, it is connections of emotions. Here it is connection of logics, numerics. Okay? We're good? Yes. Enjoyed? Yes. All right, okay. I'm going to take you to something more deeper now. Okay? We spoke about this part of the brain, right? And there is a reason why I do this very halka fulka, enjoying everything, because there's no point being serious. We just have to be sincerely understanding it and trying to work around it, okay? So now what we're going to do is, you can take this, okay? Red brain needs clarity, objectives, logic, must analyze, find structures. Green brain, nothing is connected, must act to understand. करने से समझते हैं, बोलने से नहीं समझते, right? Need feedback all the time, sees the big picture and finds alternatives of doing things. Okay? Blue brainers, everything is connected, feels environment insightful. ये लोग वो हैं जिनको वाइब आती है. वो किसी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी वेंडर के पास जाते हैं, किसी एम्प्लॉय से, उनको वाइब आती है, ये सही बंदा है. ये लॉजिक शायद नहीं बता पाएंगे आपको, पर ये बंदा सही है. This is what they've said, right? Purple brainers must have information, all data is linked, need details, finds a system. हमारे पास भी एक है ऐसा ही. मिला नहीं आपको डेमो नहीं मिला? अभी कंसल्टेंट बैठे थे तब. मिला कि नहीं डेमो? यही है वो डेमो. And there's nothing wrong. Is that okay?
There is nothing wrong. People will have different point of views, and people feel my point of view is the right point of view. But one who leads them needs to understand what is to be heard, what is not to be heard, in the direction of what is to be done. क्या है? क्या बोला? Write it down. See what I said right now. Write it down. One who is leading needs to understand what is to be heard, what is not to be heard, in the direction of what is to be executed. Because rest is kachra.